हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? कैसे हो आप सब? अच्छा, प्लीज़ मैं अपनी आवाज़ कंफर्म कर लेता हूँ कि आवाज़ वगैरह ठीक आ रही है या नहीं। उसके बाद विल स्टार्ट। जस्ट अ मिनट। कैन समवन प्लीज़ कंफर्म कि मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? आ रही है। ओके ओके, गुड सीन है, गुड सीन है। सो ओके ओके, ठीक हो गया। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसन यूसुफजई है एंड आई एम द जीडीएस लीड एट फास्ट न्यूज़ पेशावर कैंपस। वेट अ मिनट, ये मेरा अकाउंट टेक्स्ट कर रहा है। सो खैर, आई एम द जीडीएस लीड एट फास्ट न्यूज़ पेशावर कैंपस और आज हमारा पहला एपिसोड है ऑफ आवर पॉडकास्ट कॉल्ड कैसे। बेसिकली इस पॉडकास्ट का स्टार्ट इस तरह हुआ था कि हम रैंडमली जो हमारा पहला सेमेस्टर था उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें कम्युनिटीज़ के रिलेटेड सिखाई लोगों को। कम्युनिटीज़ क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्यों उसमें लाइक आपको क्यों पार्टिसिपेट करना चाहिए एंड ऑल दैट। एंड नेक्स्ट जो हमारा ये सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, बेसिकली हमने इसमें ये सोचा था कि हम थोड़ा सा लोगों को सिखाएंगे प्रैक्टिकल चीज़ें कि आप कैसे लेट्स सपोज कोई भी एक टेक्नोलॉजी है या कोई लाइक लोगों के रैंडमली क्वेश्चंस होते हैं, किसी का क्या होता है, कोई लाइक लेट्स सपोज कोई कहता है कि मैंने ये काम करना है लेकिन कैसे करना है। कोई दूसरा पूछता है कि ये करना है, कैसे करना है, लेकिन किसी को वो ठीक से आंसर नहीं मिलता, ठीक है। सो इसमें हमने ये पॉडकास्ट हम इस दफ़ा स्टार्ट किए है और इसके साथ साथ हमारा जो ये चैप्टर के हम बहुत सारे इवेंट्स भी करवा रहे हैं। रिसेंटली हमने 10 डेज़ फ्लटर चैलेंज करवाया, उसके साथ अभी हमारी फेलोशिप चल रही है एंड रमज़ान के बाद भी बहुत सारे इवेंट्स हमने प्लान किए हुए हैं, जो कि सारी इस थीम में चल रहे थे। रमज़ान के लिए हमने प्लान किया था कि हम पॉडकास्ट वगैरह रखते हैं, जो आपके सवाल वगैरह होते हैं हम बोलेंगे और थोड़ी-सी एक लाइट डिस्कशन वगैरह भी करेंगे। सो आज हमारा पहला एपिसोड है एंड काफ़ी स्पेशल एपिसोड है क्योंकि यहाँ से हम इस सीज़न को स्टार्ट करने लगे हैं और इसके लिए हमने इनवाइट किया है सबा कुलसूम को, जो कि हम बहुत अरसे से इनको रीच आउट कर रहे थे बट इनकी कुछ कमिटमेंट्स थी, कुछ हमारी थी, और जिसकी वजह से वो प्लान जो है वो मैच नहीं हो रहा था, बट फाइनली शी इज़ हियर। सो वेलकमिंग सबा कुलसूम। शी इज़ द डायरेक्टर इकोसिस्टम एट फैसेट और इनसे हम पूछेंगे इनकी जर्नी के बारे में, इनकी जर्नी कैसी रही, कैसे यहाँ तक पहुँची, और कुछ वेब3 के बारे में पूछेंगे, कुछ आप लोगों से सवाल लेंगे और इस तरह की चीज़ें करेंगे। सो हेलो सबा, अस्सलाम वालेकुम। Assalamualaikum. How are you, Hassan? आई एम गुड, हाउ आर यू? I'm doing good, Alhamdulillah. So glad to hear. So thank you so much for joining us today. Finally, it's finally happening. So अच्छा, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, सब कुछ साथ साथ करते रहेंगे। आपसे टेक्निकल चीज़ें भी पूछेंगे, थोड़ी सी कम्युनिटीज़ पे भी पूछेंगे, एक ओवरऑल इन जनरल लाइट डिस्कशन भी करते रहेंगे। बट स्टार्ट करने से पहले लेट्स स्टार्ट विद योर जर्नी, योर शॉर्ट इंट्रोडक्शन। आप अपना एक जर्नी बता सकती है अपनी स्कूल, कॉलेज और इस तरह यूनिवर्सिटी का आप बता दें कि आपने कहाँ से स्टार्ट लिया, कैसे आप इस जगह तक आई। सो प्लीज़ सर। Okay, school, college तो कहानी थोड़ी लंबी हो जाएगी, but टाइम बहुत है हमारे पास। so, so I belong to a Pathan family. I belong to KPK, but my father was in army, so I was born in Quetta, and since I belong to a military background, so obviously different postings के साथ schooling different cities से हुई, starting from Bannu, Peshawar, Pindi, and so on. And my father, when he retired from army, then we got settled in Pindi. So my family is permanently settled in Pindi. And जब बारी आई यूनिवर्सिटी डिसाइड करने की, so I was always a very grades oriented person. दुनिया में grades के अलावा कुछ नहीं देखा था, और यही फील होता था कि बस जिसके grades आते हैं वही स्मार्ट होता है और वही लाइफ में सक्सेसफुल होता है. And probably it was also because of the family perspective as well, कि शुरू से एक studies वाली routine, and everything starts and ends on studies. That's it. That's all life has. So
When it came to to choose university, since my father was in army, so I had a bit of inclination towards NUST. लेकिन पता नहीं क्यों जहन में था कि लाहौर जाना है. So I gave multiple entrance tests of NUST, PAS, IST, because as a kid I wanted to be a pilot, and UET Lahore as well. So but then ended up somehow at NUST. NUST, maybe I chose electrical engineering. A lot of people reached out to me that uh, का फ़ायदा नहीं है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, स्कोप नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, why are you doing this? And but in my mind, all that mattered was grades. So merit सबसे high है, तो चलो जी, electrical is the best choice to do. So I chose electrical engineering. I started my bachelor's in electrical engineering from NUST College of EME in 2016. Mm-hmm. First semester guzara, it was the same, because exposure abhi utna tha nahi, bas grades aa gaye. I had a very good CGPA in the first semester, and the second semester happened. Then life started kicking in. I started asking questions. जो मैं कर रही हूँ इसका क्या फ़ायदा? Why the hell am I doing it? Grades आ गए, but I don't even know what I am doing. I don't want to study circuits. मुझे नहीं बनाने circuits. क्या फ़ायदा है इसका? I started asking my professors a lot of questions. So NUST has this thing जहाँ पे वो advisors allot करते हैं आपको. So my advisor, he was always like, you are always anxious. Why is that? I was always anxious. Class में भी, class के बाहर भी, that kid who does not know what he's doing, why he's doing. So I was really self awareness, because I lacked that completely. I was just big on grades. Uh, I started Mm-hmm. asking the questions that I wanted to ask myself. I started asking questions to everyone, and that led me to like tons of mentors. Probably like when asked se bahir bhi, I Mm-hmm. started going to NIC. I started reaching out to as many people as I could. I started being active on LinkedIn. That actually led to a lot of good things and a lot of bad things. I'll talk about the bad things first. Bad things is that I started getting into, maybe you can say, acute depression, due to which I started taking therapy, and that actually helped. I would say that was the best decision I ever took in life, because that helped me Mm-hmm. become self. And I was brutally honest to myself that no, I'm not self aware. मुझे नहीं पता मुझे ज़िंदगी में क्या करना है, मैं जो कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ. So I started identifying my own weaknesses, my own strengths, and then I came across some industry leaders, and I once read somewhere that अगर आप ज़िंदगी में कुछ हो ना, if you are someone, तो अगर आप bullshit भी बोलते हो ना, तो लोग कहते हैं वाह 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 और तालियां बजाते हैं. बिल्कुल ऐसे. But अगर आप but if you are no one ना, if no one knows you, if you're not associated with anything, if that's the thing, फिर आप जो मर्जी wisdom की बातें कर लो, जितनी मर्जी अच्छी बातें कर लो, then people are like, they don't give a shit. I mean, आप जो भी बोल रहे हो, it doesn't matter. So I started Mm-hmm. asking myself that कौन ऐसा बंदा है इंडस्ट्री में that I want to be like, that I want to follow the footsteps of, to become that someone, ताकि अगर मैं कल को bullshit करूँ ना, तो people are like, oh वाह वाह क्या बात है. That was my mentality back then. But with Mm-hmm. time, I got connected to some of my seniors, and with two of my seniors, we co-founded a startup. It was a virtual reality driven edtech. So we co-founded it back in 2017. So तब हमने जब virtual reality पे काम करना शुरू किया, तो बहुत से fascinate भी हुए. बहुत लोग आते थे, Oculus पहनते थे, हमने जो environments बनाए हुए थे Mm-hmm. उनको वो करते थे, कुछ गेम्स वगैरह के लिए यूज़ करते थे और चले जाते थे. सो फैसिनेशन की हद तक इट वाज़ गुड, बट जब हमने उसको सस्टेन करने की कोशिश की, तो वी रियलाइज़्ड कि पहली बात, लोगों को समझ ही नहीं आती टेक्नोलॉजी. बहुत से लोगों को लगता था Mm-hmm. कि ये 3D वीडियो, which is not right true. I mean, 3D video and actual virtual reality is tons apart. I mean if you अगर आप में से ऑडियंस में से कोई लोग computer graphics के students हैं, they would understand when you build an environment inside through virtual reality का जो environment होता है, जो Unreal Engine, Unity वगैरह पे बनता है, that's Mm-hmm. entirely something very immersive. Like your Mm-hmm. mind is really that you're actually in that environment. सो पहले तो हमें रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा फेस की कि
आप जो कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? बहुत से लोगों को समझ ही नहीं आती थी कि एक्चुअली है क्या, बिकॉज़ मार्केट ओपन नहीं थी। इट वाज़ अ प्रीटी न्यू टेक्नोलॉजी, टर्म मेटावर्स डिडंट एक्जिस्ट बैक देन। सो वो उस तरह से भी पिच नहीं हो सकता था। सो Mm-hmm. देन वी गॉट इंक्यूबेटेड एट नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर इस्लामाबाद, and Mm-hmm. we started pitching it to some high level individuals, some delegates from abroad, and then I also got into the Google Developer Student Club Leads program, and that helped me connect to a few Googlers, and I pitched into them as well. And then I got to know that even at Google, they weren't doing anything big when it comes to like immersive technologies. Facebook, on the other hand, was doing it, and that's also why Facebook ने बाद में अपना नाम Meta कर दिया था. But I asked the program managers at Google and whatnot, but no one was actually doing anything big when it comes to these technologies. There was a lot ongoing on AI, there was a lot ongoing on other things, but when it comes to the Web3 part or metaverse or blockchain, nothing special was ongoing at Google back then. So with that, I we worked on the startup for around 4 years, जिसमें हमने different educational institutions के साथ partner up किया. Um, as a student, managing a startup is very tough. You have to, first of all, time management. First time founder hona, it's not easy. So you have to really learn to prioritize, to delegate the tasks, whatever you can do to build a community so that it can support your startup. And then funding, lack of funding is always there when it comes to startups, especially अगर आप ऐसी टेक्नोलॉजी, हाई एंड टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो जिसकी जिसकी इतनी अवेयरनेस नहीं है, then you have to be the pioneers in the industry to actually create that awareness. और अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ना पैसे चाहिए होते हैं, so वो पैसे थे Yes, नहीं हमारे yes. पास. So bootstrap करना पड़ा. Bootstrap करते हुए we realized that okay, maybe there might be some grants that we can apply to. NIC की वजह से हमें free office space मिल गई, through which we were able to pitch to some high end individuals. So we were trying to balance it out through different things. We applied to MIT Solve in 2018, and then Mm-hmm. we won that as a runner up. And फिर यूएई में एक कंपटीशन है, लाइक वी स्टार्ट आइडेंटिफाइंग इंटरनेशनल ऐसे कौन से कॉम्पिटिशन्स हैं थ्रू विच वी कैन मे बी गेट ग्रांट्स, मे बी दैट गेट दैट कम्युनिटी पार्ट, ताकि अवेयरनेस आ जाए लोगों में एक. So, Muhammad bin Rashid Initiative for Global Prosperity is the name of the competition that happens under the government of UAE. It is backed by a lot of prestigious institutions. इसमें different categories होती हैं. इसमें sustainable energy की category होती है. इसमें education, healthcare. So you have like, if you are working on anything, you can actually apply to that program. And we applied to that program, and we won that as runner up as well. जिसमें हमें, we were the only Asian startup that got there. We won a grant of 1.65 million PKR, जिसकी वजह से हमें थोड़ा breathing time मिल गया कि okay, now we have that grant, we can actually do something on ground. Then we started working on few government projects as well. I think the first thing, जब हम बड़ा, हमें एक तरह से एक अचीवमेंट वाली हमें फील आई थी, वो तब थी जब हमने अपनी यूनिवर्सिटी को एक ट्रेनिंग एनवायरनमेंट बेचा था. बिकॉज लास्ट में ईएमई में देयर बायोस ऑफिसर्स जो वो आते हैं और ट्रेनिंग, उनकी टैंक्स वगैरह में ट्रेनिंग करवाई जाती है. सो वो हमने उनको विद इन वर्चुअल रियलिटी बना के दी, एंड वी एक्चुअली सोल्ड दैट टू देम. देन वी आइडेंटिफाइड कि कुछ मार्केट में ही कुछ लोग एक्चुअली जो आर्किटेक्चर्स हैं वो अपने रियल स्टेट के प्लेटफॉर्म्स को बेचने के लिए भी they make their environments in 3D form of thing. We pitched to them and we were able to get a few projects. So हमने ये साथ ये किया कि हम सर्विस ओरिएंटेड प्रोडक्ट पे काम करते हुए एक सर्विस ओरिएंटेड माइंडसेट भी क्रिएट कर लिया, दैट टू सस्टेन योरसेल्फ यू एक्चुअली नीड टू गेट आउट इन द मार्केट एंड डू दैट सर्विस पार्ट एज वेल. सो वी वर डूइंग दैट, Yes. बट डूइंग सो मुझे रियलाइज हुआ पर्सनली कि पाकिस्तान में वी आर वेरी बिग ऑन सर्विसेज. हर बंदा यहाँ सर्विसेज दे रहा है. हम फ्रीलांसिंग में दुनिया के थर्ड लार्जेस्ट मुल्क है, लेकिन हम सिर्फ सर्विसेज फोकस्ड, विच इज़ वेरी Exactly. गुड टू सस्टेन एंड, बट वी लैक व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्ट. प्रोडक्ट में Mm-hmm. हम प्रोडक्टाइज नहीं कर पाते. So we were doing that on that end. Then I graduated, and when I graduated, so I had to think clearly that okay, अब मुझे क्या करना क्या है. Do I want to continue working on my own startup?
with my team, or do I want to like do something जहाँ मुझे learning भी हो when it comes to the overall ecosystem, और जहाँ पे financial चीज़ें भी different आ गई थी, स्टार्टअप के अंदर मसले भी स्टार्ट हो गए थे। सो स्टार्टअप के अंदर एक्चुअली फर्स्ट टाइम फाउंडर होने का नुकसान ये होता है कि आपको आइडिया नहीं होता कि जब पैसे आना शुरू हो जाए ना, तो एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट्स तब आना शुरू होते हैं विद इन द टीम। Yes. एंड देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपेंड। आप स्टार्ट में जब एज अ फर्स्ट टाइम फाउंडर, हमने भी बहुत गलतियाँ की। हमने वी वर लाइक ठीक है यार, फ्रेंड्स हैं, ऑन कॉन्ट्रैक्ट क्या करना है, बस ठीक है, इसका इतना पार्ट है, इसका इतना पार्ट है। सो लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स, and that had we kind of had to decide कि यार अब do we want to do something of our own, or do we want to like actually be in that conflicting environment. So somehow I decided to leave my stake and just get my part जो भी वहाँ तक था, and do my own thing. And the same happened with other co-founders as well. We are all on good terms. Maybe we are good friends, but we are not working together anymore. So with that, I graduated, and I was working with Saad Hamid. I'm sure you all know him because you are part of the Google Developers Club community. Yes. So I was working with him on his side projects. So I worked with him for over a year. He was a business advisor to a lot of startups. So I was working closely with him, managing his things besides Google. So that was actually something that gave me an edge early on, because working with someone who has like uh, a bit in everything. जब भी पाकिस्तान में कुछ बड़ा हो रहा होता है, तो he would be there. So I was really inspired by him in that sense, because I was sort of a person जहाँ मेरी strengths ये थी that to be a multitasker, जहाँ I don't want to limit myself when it comes to work. Like मुझे एक ही चीज़ पे काम नहीं करना, I want something very diverse, something happening. सुबह मैं कुछ कर रही हूँ, दिन में कुछ कर रही हूँ, शाम में कुछ कर रही हूँ। Like there should be multiple things. I have that sort of personality. So working with someone who is similar really gave me that sort of an edge as well. And I learned management. I learned basic things like हमारे हाँ students को when they are studying, they don't know how to write an email. To be honest, communication skills, they are very important. And even जब आप लीव के लिए अप्लाई करते हो ना, तो हमारे यहाँ स्टूडेंट्स, मेरे अंदर भी जूनियर टीम काम करती रही है इन पास्ट। what the problem I see is what they do. Email करेंगे कि hi, I need a leave from this date to this, that's it. No, that's not how you write an email for leave. You have to be very concise, you have to be very Exactly. detailed as well, that okay, I need a leave for whatever reason. You can even say that for personal reasons, I don't mind whatever reason you have for a leave, but you have to mention that these are some of the commitments, that work commitments that you are working on, and the in your absence this will be its status, and I will be rejoining back on this date. So you have to complete the circle, XYZ ABC. You can't just say that X, that's it. So basic communication skills, we all lack that. Second important thing that I realized working with people is that हमारी management skills, we are not very responsive and communicative. अगर मुझे एक काम नहीं करना, I can simply say that मुझे ये काम नहीं करना, or I need 2 days, and that helps because next person feels that at least I am communicative and responsive. हम बताते ही नहीं हैं. The issue that I face with people working is we do not want to tell that I don't want to do this. So we have, I think, second major thing from this takeaway from all this was that you should be very communicative and very responsive. And Right. while working with Saad, I was or referred to Draper University. So Draper University is a university based in US, and it is known for its entrepreneurship programs. So Tim Draper, he's actually an investor at Tesla, SpaceX, Twitter, so big things, Great. and got to learn from him. I was part of the program Fundamentals of Entrepreneurship. It was an amazing program where we got to pitch as well. We won there from we won as runner up वहाँ भी, and and from there I got an offer as well. So I got an offer to work with a startup accelerator, जिसमें हम कर ये रहे थे कि we were helping different startups with investment readiness. With investment readiness में different चीज़ें होती हैं, उसमें pitch deck आ गई, आपकी आपकी different documentations आ गई,
lawyer, जितना भी legal tax वगैरह का scene है, वो सारा we were looking at it, and then growth and strategy of expansion strategy of the startups. So I was merely focused on that part. जिसमें we have some really good stories as well. जिसमें DevTalk was one of our startups, and we all know if you guys probably know DevTalk, they're a very good startup, exemplary founders who not only got to scale across the globe, but also raised a lot, and they have a very strong community in Pakistan and beyond. And then some of our startups raised from Draper Ventures and some other big VCs as well, while scaling to Middle East and Europe. So after that, I was reached out by Collabs through LinkedIn. So again, the big Mm. takeaway is be active on LinkedIn. And by being active, I don't mean that randomly Facebook की तरह use करना शुरू कर दो, memes डालो या अपनी अभी pictures डालो. No, nothing like that. लिंक्डइन भी उसी साइड पे Keep जा it रहा है धीरे धीरे। yeah, keep it very very professional, and be active in a way that kind of आप अपनी updates देते रहो. If you are doing something good in your work, update on it that oh hey, I'm doing this. Get things out there. एक और बहुत बड़ी problem that students reach out to me a lot कि I have this idea in my mind, should I work on it? And the first question I ask them is, have you worked on it and have you put it out there? And they're like, no. Now the thing is, 2 महीने सोचने से बेहतर है या 2 महीने किसी और से पूछने से बेहतर है कि उस पे काम करके post it on LinkedIn, post it anywhere, and you will आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा if it is something that you should be doing or not. So use LinkedIn, use Twitter, use these technology, these social media tools, and I think they can be very helpful when it comes to your professional journey. And आपको कहीं jobs के लिए apply करने की ज़रूरत नहीं है if you are actually doing that. People will already know that you are someone that exists in this industry. Reach out to professionals, reach out to mid-level managers of big companies, of startups that have raised. Reach out to them, tag them, comment on their posts, have 30 minutes to 45 minutes one-on-one sessions with them. Zoom, Google, we are doing this virtually, right? So you can do this. I mean, आप daily किसी एक नए बंदे से बात कर सकते हो if you want to, if you have that will to actually learn something. So second thing that Collabs reached out to me through LinkedIn. I never imagined that I would leave my family and live on my own completely. But it was decided in literally like 3 to 4 hours that I'm moving to Lahore to work. अब इसकी वजह से बहुत से लोगों को लगता है जैसे मैं लाहौर बेस्ड हूँ अभी भी। वो मशवरा होता है तो वो यही पूछते हैं कि आर यू लाहौर वैसे बेस्ड? बट आई एम नॉट लाहौर बेस्ड। I moved to Lahore. So I moved to Lahore for Collabs. I lived there for 1.5 year. Worked with them, जिसमें हमने investment भी raise की. We raised a $3 million seed round from the top VCs, not only in Pakistan but also internationally. Internationally, हमने Turner, Novak, Banana Capital के हैं, Antler. We raised fund from them, and in Pakistan, it was for the first time that 3 big VCs came together. जिसमें Indus Valley Capital हैं from Atif Awan, Zan Capital, and Fatma Gobi Ventures. So the top VCs, and we kind of raised $3 million from them. And I was the one leading the startup ecosystem initiatives. So I built CoGrow, which was more like a startup accelerator, but in terms of not reinventing the wheel, but rather strategizing and partnering up with people who are already doing it and bringing them in. So office hours with investors, different initiatives that we took, networking Thursdays, different initiatives that we took under that initiative, and kind of worked on that. And that's where I hosted Web3 Summit with Binance. So वहाँ पे I realized that I think now is the right time that I can connect the dots in my journey back then and actually move to the industry from where I started. सो अब मेटावर्स की लोग बात कर रहे थे, अब लोग NFTs की बात कर रहे थे. नाउ पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, AI वाज एवरीवेयर, Web3 की टर्म आ गई थी, अम्ब्रेला टर्म. So now I kind of realized that 6 years ago no one actually knew what it was, but now people are talking about it. So maybe I should move back to the industry that I want to work in. And so connecting the dots reflected on my journey, and I was reached out by Facet. So I moved to Facet with my current role that I have of director of ecosystem.
So a bit about Facet. Facet is an internationally regulated digital assets gateway. We are based out of Indonesia. We have markets in UAE, Turkey, Bahrain, Malaysia, Pakistan, Bangladesh, and we are tapping into other frontier markets. We have raised $22 million Series A round. एंड अगर फंडिंग राउंड्स का किसी को आइडिया नहीं है सो यू कैन सर्च अबाउट इट. प्री सीड राउंड होता है, सीड राउंड होता है, देन सीरीज ए, सीरीज बी एंड सीरीज सी गोइंग ऑन जब आप एक्सपैंड करते हैं जैसे जैसे. So we raised a Series A, and with that, I'll come to Web3. So Web3, I'm not giving you any chance to speak. So if you have any questions, feel free to. You're on mute. Sorry. I said I have a lot of questions, but carry on. Like, अभी आपकी journey देख लेते हैं, then. I'm seeing some comments on Web3, so I thought let's get to the Web3 part. Um, अच्छा, आपने जो अपनी जर्नी बताई, लाइक इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. कहाँ से डबल ई से आप इधर गई उधर गई, लाइक आपने कम्युनिटीज़ भी देखी, आपने टेक्निकल जर्नी भी देखी, आपने ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें देखी हैं. मोस्टली पाकिस्तान में जो है सारे लोग लाइक लेट्स सपोज कोई एक डिग्री कर रहा है तो वो उसी में बस हो जाते हैं कि यार बस यही मेरी फील्ड है और मैंने इसी में जाना है. कोई खुद को एक्सप्लोर नहीं करता. इवन mm, एफएससी के टाइम भी कहते हैं यार हमें नहीं पता हमने क्या करना है, बस एडमिशन ले लेते हैं एंड देन कहते हैं यार ये तो मैंने करना ही नहीं था. सो जर्नी आपकी काफ़ी इंटरेस्टिंग है. आपने अपनी इंटरेस्ट की तरफ गई, आपको जो अच्छा लगा आपने लाइक एटलीस्ट ट्राई किया, जो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि आजकल जो एक ट्रेंड चला आ रहा है कि यार डिग्री वर्सेस नो डिग्री, इस बहस में तो मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन जस्ट एक चीज़ है कि लोग क्यों लाइक फ्रीलांसिंग की साइड पर तो आ रहे हैं, लेकिन जब आपने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ जो आपने गुजारी, आपको क्या ऐसा डिफरेंस लगा कि यार एक बंदे को यूनिवर्सिटी लाइक लाजमी जाना चाहिए? क्यों? लाइक होता है ना कि मैं अगर अपना बताऊँ तो मैंने तो बहुत सारी न्यू चीज़ें यूनिवर्सिटी आके देखी कि अच्छा ये भी होता है, ये भी होता है, लाइक आपको एक अवेयरनेस मिल जाती है. सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस क्वेश्चन? क्योंकि ये काफ़ी लोग पूछ भी रहे थे कि यार इसका क्या करना है, सो बस लाइक ये पूछ लेते हैं. सो आई थिंक टू ईच हिज ओन. मैं ये बिल्कुल भी नहीं प्रीच करूंगी कि आप डिग्री करो या आप डिग्री ना करो. आई वुड से इट्स कम्प्लीटली ऑन योर ओन. देखें, अगर आप डिग्री नहीं करते हो, आई जस्ट टेल यू द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बोथ. बाकी आपकी मर्जी, आपने करनी है नहीं करनी. यू कैन बी सक्सेसफुल विदाउट अ डिग्री. आई एम नॉट सेइंग दैट यू कांट बी हुँ, सक्सेसफुल हुँ, हुँ. विदाउट अ डिग्री. But on the other hand, you can be very unsuccessful without a degree as well. So it exists on both hands. ठीक है, कोई हुँ, white and black, वो white and black वाला सीन नहीं है. Be in the gray phase. Why? Because see, अगर आपके पास डिग्री नहीं है, I have seen people. They have tremendous skills. They have been doing a lot of work. It's all digital area. You can become an influencer. You can become whatever you want, literally. It's kind of that sort of world in these days. But on the other hand, आप कर क्या रहे हो अपनी ज़िंदगी में? देयर इज़ अ बहुत से लोग इंस्पायर कुछ फॉरेनर से हो जाते हैं, वो बिल गेट्स से हो गए फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ ड्रॉप आउट है कोई यूएस बेस्ड, उनसे इंस्पायर हुँ, हो गए. हुँ. तो पॉइंट ये है कि देखें वो कहाँ पे रह रहा है, वो कहाँ से ड्रॉप आउट हुआ है. वो यहाँ पे एग्ज़ैक्टली. किसी आई वोंट नेम एनी यूनिवर्सिटी, इट्स काइंड एबीसी ऑफ शिट यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी, बट वो पाकिस्तान में किसी थर्ड क्लास, हाँ, वो किसी थर्ड क्लास यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट नहीं हो रहा. अगर वो ड्रॉप आउट हो रहा है ना, तो वो स्टैनफोर्ड से ड्रॉप आउट हो रहा है या वो हार्वर्ड से ड्रॉप एग्ज़ैक्टली. आउट हो रहा है. नाउ व्हाट इज़ दैट स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड ब्रिंग्स? ऐसा नहीं है कि वो कोई आसमान से आई हुई यूनिवर्सिटीज़ हैं. हम बहुत सी जगहों पे एक्सक्यूज़ेज़ भी अपने लिए बनाते हैं कि वो पाकिस्तान में शायद हमारा उन लेवल ऑफ एजुकेशन वैसा नहीं है जैसा वहाँ. ऐसी ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है. आई थिंक जो एक चीज़ एडिशनल है इज़ द एक्सपोज़र टू द नेटवर्क दैट दे प्रोवाइड. ठीक हुँ, है? हुँ. रिसोर्सेज़, जो किताबें वहाँ पढ़ाई जा रही हैं ना, वो किताबें आप पाकिस्तान में बैठ के भी पढ़ सकते हो. इंटरनेट पे सब अवेलेबल है, अगर आप पढ़ने वाले हो, पहली बात. और दैट्स व्हाई आई रियली बिलीव इन द कम्युनिटी एस्पेक्ट, बिकॉज़ जो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, आई थिंक दैट्स द राइट नेटवर्क. एंड विद दैट नेटवर्क आप एक्चुअली एक अपने जर्नी को 2x इम्पैक्टफुल तरीके से एक सक्सेसफुल जर्नी की तरफ लेके जा सकते हो. सो डिग्री और नो डिग्री, आई पर्सनली वुड से, अगर मुझसे कोई पर्सनल ओपिनियन पूछे, आई वुड से गो डू अ डिग्री. व्हाई?
जब आप एफएससी में पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में होते हो ना, हमारे यहाँ एक्सपोजर नहीं है, अर्ली ऑन एक्सपोजर नहीं है। बहुत बड़ा मसला ये है कि बच्चा मास्टर्स कर रहा होता है, पेरेंट्स इतने प्रोटेक्टिव होते हैं, खुद काम नहीं करेगा, अभी पैसे हम पेरेंट्स दे रहे हैं, व्हाई? When I started university, I felt shameful that I was taking money from my parents. Like after literally like 12 to 13 years of education, if I'm still taking money from my parents, it's a shame to me personally. That's my personal opinion. हमारे यहाँ मास्टर्स कर रहा होगा, 30 साल का होगा, अभी भी पेरेंट्स के पैसों पे पल रहा होगा. दैट्स नॉट समथिंग दैट शुड बी. पेरेंट्स, आई थिंक दैट्स वेयर पेरेंटिंग कम्स. सो मैं तो कहती हूँ 12-13 साल का बच्चा, लगाओ उसको काम पे, दिखाओ उसको दुनिया कैसी है, एंड 18 साल का होते ही जस्ट गेट देम इंडिपेंडेंट. इट इज नॉट कि आप आई मीन एज अ पेरेंट्स आप उनकी केयर नहीं कर रहे, यू आर एक्चुअली वेरी केयरिंग फॉर देम कि कल को वो कुछ कर सके अपनी लाइफ में. अगर एग्जैक्टली। आप इतना प्रोटेक्टिव होगे फॉर हिज लाइफ, आई मीन दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर. सो फर्स्ट हम्म। थिंग दैट आई बिलीव कि यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ अर्ली ऑन एक्सपोजर है नहीं. यूनिवर्सिटी आपको वो एक्सपोजर देती है. सो फर्स्ट, दैट्स व्हाई आई फील यूनिवर्सिटी होनी चाहिए. डिफरेंट पीपल, आई मीन सोशल स्किल्स, हमारी सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी खराब है, वी कांट इवन टॉक टू समवन प्रॉपरली, वी डोंट हैव दैट एम्पैथी व्हेन इट कम्स टू पीपल, वी डोंट कनेक्ट विद पीपल रियली हम्म। डीपली, जिसकी वजह से हम कनेक्शंस नहीं बिल्ड कर पाते इन लाइफ. हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स लेटर ऑन लाइफ उसमें इफेक्ट होते हैं बिकॉज वी आर नॉट गुड विद दीज थिंग्स. सो देयर जी। इज अ लॉट. आप आपकी इवन जो इमोशनल क्वोशंट है ना आपका, वो भी सोशल इंटेलिजेंस से बिल्ड होता है, एंड दैट कम्स विद सोशल स्किल्स. So you really have to connect to people, and I think university gives you that part. आप जब यूनिवर्सिटी जाते हो ना, आप शायद अपने घर से ज़्यादा टाइम यूनिवर्सिटी में गुजार रहे होते हो. इसी ऐसा ही है, तरह बिल्कुल वर्क ऐसा लाइफ में आप घर से ज़्यादा टाइम अपने वर्कर्स के साथ गुजार रहे हो इफ यू आर नॉट वर्किंग फ्रॉम होम. ही। So these people, the kind of people you are surrounding yourself, they really matter. But university, maybe I think the one thing that you should be really, really careful of, students should be careful of, is that what sort of people they have around. कौन फ्रेंड्स हैं हम्म। उनके. आई रियली बिलीव कि आप फ्रेंड्स वो लोग होने चाहिए हु आर सीनियर्स टू यू, हु आर, you should be reaching out to your alumni, you should be sitting with your professors, you should be sitting with the right people that you want. हम्म। And अपने सेल्फ अवेयरनेस जर्नी आई थिंक अर्ली ऑन स्टार्ट करना, कहीं से भी स्टार्ट हो, वो इम्पोर्टेंट है. डिग्री फिर आप करो या ना करो, बट इन एनवायरमेंट लाइक पाकिस्तान, आई वुड से डिग्री इज इम्पोर्टेंट. ओके, परफेक्ट। वही बात के जो हमारे पाकिस्तान का लिटरेसी रेट जा रहा है और उस हिसाब से अगर अभी लोग कहें कि यार हमने नहीं करनी और एजुकेशन नहीं हासिल करनी, तो आई थिंक हम आगे जाने की जगह पीछे ही आ रहे हैं, लाइक। और जो चीज़ आपने बताई, जो जिस तरह कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई और इस तरह की चीज़ें, मैं पर्सनली बहुत किस्म का, मतलब शाय किस्म का इंट्रोवर्ट बंदा, और अभी मैं खुद को देख रहा होता हूँ कि मैं मतलब कहाँ से कहाँ चला गया। तो ये सारी यूनिवर्सिटी कुछ कम्युनिटीज़ की चीज़ें थी, कुछ मैंने खुद ही खुद को पुश किया कि चलो यार हमेशा तो सेम नहीं रहना। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। यस, ये आपको एक एनवायरनमेंट मिलता है तो आप वो काम करते हो। सो ये था एक इंटरेस्टिंग पॉइंट। अच्छा, उसके बाद जो आपने उस टाइम एक बात की अबाउट फ्रीलांसिंग एंड इस तरह की चीज़ें, जिस तरह मैनी पीपल इन पाकिस्तान जो फ्रीलांसिंग के साइड पर आते हैं, एंड इट्स अ गुड थिंग, यस इट इज़ अ गुड थिंग। बट एक सवाल था, वो ये कि हमारे एक जानने वाले जिन्होंने बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात की थी, वो ये कि पाकिस्तान में लोग फ्रीलांसिंग करके इवन घर भी बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बट मसला ये होगा अगर हम सर्विसेज प्रोवाइड करते रहे, मसला ये होगा कि हम कभी एप्पल नहीं बना सकेंगे, हम कभी गूगल नहीं बना सकेंगे, हम कभी माइक्रोसॉफ्ट कुछ इस तरह की बड़ी एक चीज़ नहीं बना सकेंगे। सो आपको क्या लगता है क्यों हम प्रोडक्ट बेस्ड नहीं जाते? हम सारे ही जिस आप कोई भी एक आईटी पार्क चले जाओ, आपको मोस्टली एक वही मिलेंगे जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। सो आपको क्या लगता है क्यों हम जो है प्रोडक्ट साइड पे कम जाते हैं? क्या पाकिस्तान की मार्केट इस तरह है, या क्यों हम क्यों उस साइड पे नहीं जाते? देखिए, आई थिंक जनरली अगर देखा जाए ना लाइफ में, तो सबसे बड़ा मोटिवेटर जो होता है ना किसी भी इंसान के लिए, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज, और स्पेशली विद द इनकम पावर दैट पाकिस्तानीज हैव, दैट्स मनी. ठीक है. तो जहाँ से भी पैसा आता है ना, द माइंडसेट गोज देयर. एंड सो जब पैसा सर्विसेज से आना शुरू हो गया ना, इजी मनी, तो वी काइंड ऑफ
start relying on that, which is not bad. ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि सर्विसेज खराब है. Very good, आप पैसे कमा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है. Trading is something which is important for developing countries. So nothing bad in that. But I think what's missing is, और पाकिस्तानीज का एक और मसला ये है कि एक चीज़ बज़वर्ड बनती है और पूरी कौम उसके पीछे लग जाती है. सो बज़वर्ड वाज अमेज़न, हर कोई अमेज़न सेलर है. बज़वर्ड वाज एआई, हर कोई एआई में है, चाहे उसने कभी कोड ना किया हो, बट वो एआई में ज़रूर है. इवन मेरी भी अपनी स्पेशलाइजेशन मैंने एआई और कंप्यूटर विजन में की, बिकॉज इलेक्ट्रिकल में मेरे पास दो ऑप्शंस थे, इधर गो फॉर पावर और गो फॉर एआई, एंड डेफिनेटली नॉट अ पावर पर्सन, सो आई चोज एआई. ठीक है. एंड बहुत से लोग ये भी मुझे कहते हैं कि आपको आपकी डिग्री का क्या फायदा, अपनी डिग्री ज़ाया कर दी, विच इज़ हम्म, नॉट ट्रू. वाई? बिकॉज आई हैव दैट अंडरस्टैंडिंग एटलीस्ट. आई कैन वर्क विद टेक्निकल स्टाफ. I can understand code at least. So although I am not a coder, I never preach कि मैं बहुत techie हूँ. I am not. Let's be very clear here. But I have that understanding, and that gives me an edge over a lot of people when it comes to management, when it comes to investment readiness, when it comes to other things. So understanding technical stuff helps. फिर आपने बात की कि क्यों ऐसा है कि हम प्रोडक्ट साइड पे नहीं जाते. सो आई थिंक दीज टू आर द मेजर रीजंस, एंड वी काइंड ऑफ मिस्ड द डॉट कॉम दौर, बिकॉज हम ज़रा लेट एक्सपोजर हुआ हम पे. फिर हमने स्टार्टअप्स का एक थोड़ा दौर, वी आर गेटिंग देयर स्लोली बट श्योरली, बट नॉट राइट. अभी भी हम बहुत अर्ली स्टेज पे हैं व्हेन इट कम्स टू स्टार्टअप्स. अभी भी हम्म, जब हम देखते हैं तो बहुत से लोग सर्विसेज माइंडसेट के साथ चल रहे हैं. और जहाँ पे आई थिंक जो मुझे लगता है व्हाट्स रॉन्ग इज दैट हम यूके यूएस बेस्ड बहुत से स्टार्टअप्स को, बहुत से मार्केट को सर्व कर रहे हैं सर्विस माइंडसेट के साथ. हम इक्विटी नहीं मांगते, हम पार्टनर्स नहीं बनते, हम अपना उस तरह से कुछ नहीं करते. एंड दैट एक्चुअली मेक्स अस फॉलोअर्स. हम बस लिटरली जो चीज़ हम 80% शेयर जिसका ले सकते थे, वो हम 50% लेके खुश हो रहे होते हैं कि हम हमने बहुत बड़ा तीर मारा. सो हम्म, सो आई थिंक वी डू नॉट रियलाइज वी डू नॉट रियलाइज द वर्थ ऑफ आवर वर्क. हम खुद को अंडरसेल करते हैं. वी हमारा ह्यूमन कैपिटल इज सो गुड. आई वर्क विद अ लॉट ऑफ फॉरेनर्स, एंड आई काइंड ऑफ रियलाइज्ड कि हमारी कौम कितनी ज़्यादा स्ट्रीट स्मार्ट है. लाइक इतने इतने डम्ब लोग मुझे मिले हैं काम करते हुए, दैट लिटरली दे वर्क विद द मेंटालिटी ऑफ क्लर्क माइंडसेट. इसकी भी हम्म, रीजन है. when I kind of had a deep dive कि ऐसा difference क्यों है when it comes to the working mindset. Most of the people that I have worked with from US, from UK, they have this mindset of they do not want to become thought leaders. Not everyone, I'm not saying everyone, but generally जो मैंने एक perception देखा है. जब आप पाकिस्तानी डेवलपिंग कंट्री से जो लोग होते हैं ना, इवन आई वर्क विद पीपल फ्रॉम नाइजीरिया, वंडरफुल फोक्स, लाइक दे विल लीव यू, मतलब कहीं का नहीं छोड़ेंगे वो आपको. दे हैव द स्किल्स दैट दे हैव इज अमेजिंग. व्हाई? बिकॉज आप जब सर्वाइवल माइंडसेट के साथ आते हो ना, एक सर्वाइवल आप आपके फेज में होता है, तो आप यू वर्क ऑन योर सेल्फ 10x मोर. आप जो काम हम्म, कर रहे होते हो, यू गो आउट ऑफ द वे. बट अगर आप एक बड़ा बड़ा हम्म, सैचुरेटेड मार्केट है, आप सब सेट है, लाइफ में कंफर्ट है, वो रेस्टलेसनेस नहीं है आप में वो हम्म, इम्पैक्ट लाने का एक तरह से वो जज्बा नहीं है आप में, तो आप भी कहोगे कि केपीआईज पूरे करो, पैसे दो और मैं जाऊं. So this with this हम्म, mindset, so productization, I think at this point is very very important. हम हमें we should be, ठीक है आप सस्टेन करने के लिए सर्विसेज करो, डेलीगेट योर टास्क एवरीथिंग, but then focus on the bigger picture and work towards product side as well. दैट्स एक इंटरेस्टिंग आपने एक वो शेयर किया. एंड यस, हम मोस्टली इसी साइड पे हमारे पाकिस्तानी जा रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट बात हुई है कि एटलीस्ट हमने उस साइड पे जाना शुरू कर दिया है अभी. पाकिस्तान में भी लोग धीरे धीरे इस साइड पर आ रहे हैं, फ्रीलांसिंग पर आ रहे हैं. इवन टेक्निकल लोग पहले बहुत कम हुआ करते थे, अभी जिस तरह जो ट्रेंड जा रहा है, मोस्टली लोग आप देख रहे हो हर साल इतने लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं. पर अगेन वो साइड पे नहीं जाएँगे, बहुत लंबी चीज़ हो जाएगी. अ, अच्छा, फाइनली उस चीज़ पे आते हैं जिस पे लोग अक्सर पूछते भी हैं, व्हाट इज़ वेब 3.0 एंड क्या डिफरेंस है पिछले जो हमारा वेब 2.0 चल रहा था एंड अभी जो 3.0 आया है? क्या डिफरेंस है एंड क्यों ये अ, आगे की जो हमारी चीज़ है वो चेंज क्यों करेगा? लाइक व्हाट इज़ वेब 3.0 फॉर अ लेमेन पर्सन? लाइक आप किस तरह एक नॉर्मल बंदे को कैसे समझ आएगी वेब 3.0?
goes अच्छा, out of the बहुत से other. लोगों को लगता है ना, स्टार्ट विद दिस मिथ, बहुत से लोगों को लगता है कि वेब3 कोई नई टेक्नोलॉजी है जो अचानक से आ गई है, ओह Mhm. वाओ बड़ी इनोवेटिव Mhm. टेक्नोलॉजी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज हाउ वर्ल्ड वर्क्स। दुनिया ऐसी चलती है कि सर्टन टेक्नोलॉजीज होती हैं पैरेलल में, कहीं ना कहीं साइलोज में डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पे काम हो रहा होता है, और अचानक से फिर पीपल रियलाइज कि ओ दे कैन बी इंटीग्रेटेड, ओ दे कैन बी अंडर वन अम्ब्रेला, दे सो इस तरह की चीज होती है। So going back to 90s, I think from where it all started, जब इंटरनेट आया था नया नया, तो जब इंटरनेट स्टार्ट Mhm. हुआ था तो वी हैड जस्ट स्टैटिक वेबसाइट्स होती थी याहू पे, याहू वगैरह, जो हम सिर्फ पढ़ सकते थे, राइट? सो ऑब्वियसली इट वाज समथिंग वेरी गुड, बिकॉज एक revolution था एक तरह से। आई मीन दिस वाज समथिंग मैजिकल फॉर पीपल कि यू कैन हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इन दैट वे। एंड फिर वहाँ से लोगों को रियलाइज हुआ कि अगर इंटरनेट पे मैं पढ़ सकता हूँ, व्हाई कांट बी देयर समथिंग लाइक जहाँ इंस्टेंट कम्युनिकेशन हो सके, मैसेंजर्स आना शुरू हो गए। सो देन पीपल रियलाइज कि दे कैन कंट्रीब्यूट टू इंटरनेट एज वेल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसका Mhm. प्लेटफॉर्म है बस वो कंट्रीब्यूट कर रहा है एंड आई एम जस्ट रीडिंग दैट, ठीक है? सो विद दैट इट लेड टू वेब 2, जहाँ पे राइटिंग कैपेबिलिटी आई, एंड विद टाइम इतना इतना ज़्यादा हो गया कि पीपल स्टार्टेड, सोशल मीडिया का दौर आ गया, पीपल स्टार्टेड मोनेटाइजिंग सोशल मीडिया। एक बहुत स्टार यूज केस इज एक्चुअली ई कॉमर्स। ई कॉमर्स एक ऐसा यूज केस है जो ना होता अगर राइटिंग कैपेबिलिटी ना होती। तो आई थिंक सोशल मीडिया मोनेटाइजेशन एंड ई कॉमर्स आर वेरी बिग यूज केसेस ऑफ वेब 2। बट वेयर आर द गैप्स? आई थिंक गैप्स अभी रिसेंटली आपने शायद आपने से बहुत से लोगों ने देखा हो कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स के फेसबुक अकाउंट्स बैन हो गए, ब्लॉक हो गए, एंड दे आर नॉट, they weren't able to do anything about it। वो उन्होंने लेटर लिखे, पता नहीं क्या कुछ किया, बट नहीं हुआ, ठीक है? Mhm. तो कमी बाय बिकॉज कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स कौन सेट कर रहा है? वो प्लेटफॉर्म खुद सेट कर रहा है वेब 2 का। सेकेंडली, आई एम सीइंग अ कमेंट, हु आर यू? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो in past या आप 45 पीछे जाके minutes देख लें। okay, so back to the topic. Okay, and Web 2 is actually okay, okay. And with Web 2, I think gaps was there कि एक तो जो revenue generate हो रहा है, for example, Facebook, Twitter, and other platforms, if they were they Oh, are generating okay. tons and millions of revenues। तो उसमें से कितना शेयर आपको मिल रहा है? सिवाय जो सोशल मीडिया मोनेटाइजेशन का पार्ट है, यू आर नॉट ओनिंग द एसेट, राइट? बस थोड़ा सा शेयर आपको मिल जाता है बिकॉज वो एक मोनेटाइजेशन का उनका जो भी तरीका है। सो विद दैट आई थिंक रेवेन्यू आपको नहीं मिल रहा, कंट्रोल आपके पास नहीं है, ओनरशिप आपके पास नहीं है। सो वेब 3 इज बेसिकली रीड, राइट एंड ओन। सो इंटरनेट के तीनों एरियाज वेब 3 कवर्स दैट। सो ओनरशिप जो है ना, वो अब सिर्फ प्लेटफॉर्म होल्डर्स से आपके पास आ गई एज अ यूजर। सो दिस इज Hmm. व्हाट वेब 3 इज। और आपने पूछा कि हाउ इट इज इवॉल्विंग डिफरेंट इंडस्ट्रीज। सी, जब ओनरशिप आपके पास आ गई ना, तो गेम ही चेंज हो गई। तो फिर इट एक्चुअली not only helping you generate money on your own, it can, it has the potential it has is like revolutionizing every industry. Just give me a second. It's okay. Okay. अच्छा, ये Apologies, कंफ्यूजन हुई it's my थी। family. नजम नजम जो है वो साथ से पूछा था, हु आर यू? ओके, ओके। सो Yeah, I यस, just saw the comment. All ओके, right. सो So I think the potential it has, Web 3 has, is to revolutionize every industry, be it real estate, be it education, be it money making, फ्रीलांसिंग की सिर्फ अगर छोटी सी एग्जांपल ली जाए तो हमारे यहाँ जब फ्रीलांसर्स हैं वो $5 से लेके $50, $100, डिपेंडिंग ऑन प्रोजेक्ट्स, $200 प्लस भी काम करते हैं। वो Web 2 के ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स होते हैं। एंड Web 3, the potential it has, if you allow me to share my screen, I would like to maybe show you यस, the यस, यस। graph that I have. ओके, ओके।
All right, so I'm not able to share my screen, so I'll just. ये सो आपने क्वेश्चंस ऑडियंस से भी इधर-उधर से भी उठाए हुए हैं, जो कि उनको भी खैर थोड़ा-सा टाइम देंगे। ओके, सो किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख सकते हो, विल नोट इट डाउन। और जैसे क्यू&ए का सेशन आता है, तो उसमें हम उनसे पूछ लेंगे। आप लोग को कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो आप लोग पूछ सकते हो। Please feel which I am able to now. Sorry, yes. Here you go. आई थिंक आपका इंटरनेट का इशू है। कोई बात नहीं। Can you guys? आई थिंक आपके इंटरनेट पे इशू हो गया था। Please feel free to ask. लगता है उनका इंटरनेट का इशू हो गया, बट शी विल बी बैक। जब तक किसी को भी क्वेश्चन है, तो हमने कुछ क्वेश्चंस नोट डाउन कर लिए हैं। साथ ने मुझे भेजे हुए हैं। जैसे ही वो वापस आती हैं, सो हमसे पूछते हैं। तैमूर, यस, गो अहेड। आई थिंक शी इज बैक। अच्छा, अगर आपका इशू हो रहा है स्क्रीन शेयर करने में, सो इट्स ओके। यस, यस, वी कैन सी यू। अच्छा, अगर आपका स्क्रीन शेयर करने में कोई इशू हो रहा है, सो आप बता सकती हैं वैसे ही, और यू कैन शेयर द लिंक। Is it still not better? यस, अब बेटर है। यस, अब चल रहा है। Really apologize. I just changed my internet. ये अगर आप कल मेरा इंटरनेट देख लेती, जो 10 दफ़ा बंद हुआ है। आई डोंट नो व्हाई पाकिस्तान के इंटरनेट का इशू कभी आई थिंक ठीक नहीं होगा। आई थिंक फिर उनका इंटरनेट
Yeah, we are talking about Web3 and हमारे basic. Now it's gone again. I think it's better now. तीन इंटरनेट चेंज कर चुकी हूँ. I think yes, अब ठीक चल रहा है. Okay, perfect. If you have any questions, please feel free to ask, especially regarding Web3, because we haven't talked much about Web3, I guess. अच्छा, एक क्वेश्चन आया नीचे सैम का, वो कहते हैं कि यार वाई Web3 3.0? Why is like the matter of survival. Web 2 ऐसा नहीं था कि आपको आपको किसने कहा था फेसबुक पे अकाउंट बनाओ? किसी ने कहा तो नहीं था, आपको बनाना पड़ गया, राइट? किसने आपको कहा है कि लिंक्डइन पे जाओ? किसी ने नहीं कहा, बट आपको जाना पड़ गया. सो इट्स लाइक अ मैटर ऑफ सर्वाइवल. जब जब हर इंडस्ट्री इवॉल्व होगी ना, जब आप एजुकेशन वाइज आपकी जस्ट अ सिंपल यूज केस के जब आप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हो, तो जब किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो या बाहर जाते हो, पहले ये होता था कि आपको एचईसी से जाके अपनी अपनी डिग्री वेरीफाई करवानी पड़ती है कि अब मैंने 4 साल पढ़ा है, मैंने फीस दी है, बराए मेहरबानी मुझे मेरी डिग्री वेरीफाई करके दे दें. सो कंसिडर कि ये चीज़ ब्लॉकचेन पे हो, आपका एडमिशन प्रोसेस ही सारा वेब 2 की जगह वेब 3 पे हो, तो यू आर ऑलरेडी वेरीफाइड. यू आर ऑलरेडी वेरीफाइड थ्रू एचईसी. यू डू नॉट नीड टू डू ऑल दिस. ठीक है? सो this is just a small use case of how it is revolutionizing the industries. So अगर बात की जाए टेक्नोलॉजीज की, रिसेंटली चैट जीपीटी आया. नो वन आस्क्ड यू टू यूज इट, बट यू हैव टू यूज इट. बहुत से लोगों को ये डर है दैट एआई इज रिप्लेसिंग अस, एआई इज रिप्लेसिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज, इट इज रिप्लेसिंग ह्यूमन जॉब्स, विच इज ट्रू टू सम एक्सटेंट. But there is this quote that AI will not replace you. A person using an AI will definitely replace you. So, agar you are not using it, why again? You are not using it, so someone who is using it is doing a much better job than you. So you will be replaced very easily. अगर एक काम है, आप खुद एज एन एम्प्लॉयर सोचो, अगर एक काम आप 2 लोगों को देते हो, एक जो है वो चैट जीपीटी यूज़ करके उसमें रिफाइन करके अपनी क्रिएटिविटी ऐड करके एक चीज़ कर देता है विदिन हाफ एन आवर, और आप उस पे लगाते हो 2 दिन और क्वालिटी फिर भी उसकी बेहतर नहीं होती है. तो who wins it? I think it's very self-explanatory who wins it. So I think Exactly. why is just like there is no why. You have to. Yes. Yes. So any platform. True. हाँ. There's a question from Najib. Yeah. Yes. Any platform दो suggestion for learning? So अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ कुछ प्लेटफॉर्म्स, तो आई वुड से बी एक्टिव ऑन ट्विटर and use ChatGPT like anything. Day and night use it to learn things. अगर बात की जाए डिग्री वाइज, so there is no specific degree or anything that anyone is offering at this point when it comes to Web3. There's this platform called Alchemy, AL आगे केमिस्ट के ही केमी एंड अल्केमी, उसको जाके एक्सप्लोर करें. इट हैज़ वेरी गुड रिसोर्सेज. इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट व्हेन इट कम्स टू ब्लॉकचेन डेवलपमेंट. आपने रोड मैप पूछा ब्लॉकचेन डेवलपर का, they were very good and concise boot camp on blockchain. I personally took that and would give positive reviews on it. अगर आप local touch के साथ चाहते हैं, so we at Facet do have recently हमने करवाया 6 modules का एक एक कोर्स विच वाज साथ ही हम वी आर करंटली वर्किंग, सो वी आर पार्टनर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम, जिसपे हमारा कंप्लीटली फोकस है ही वेब3 एजुकेशन और अवेयरनेस पे. So if we are completely focused on Web3 education and awareness, so we are now also big on actually going towards certification programs, because हमने जब first training program करवाया, so वहाँ पे वो थोड़ा generic था. It was all about we divided it into 6 modules. What Web3 is, blockchain fundamentals क्या है, आपने blockchain developer कैसे बनना है, complete roadmap to it, building Web3 companies. I think at this point we do not need to be followers anymore.
let's be pioneers in some industry, and usme you need to start building web3 companies yourself. So we kind of had that module as well, how to develop, how to build web3 companies. Then money mates investment की जो थोड़ी ट्रिक्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स थी, जिसमें हमारे यहाँ बहुत से गलत वो ये कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं पाकिस्तान में जिन्होंने एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट दे दिया है ऑफ 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 क्रिप्टो एंड वेब थ्री, जिसकी वजह से थोड़ा नेगेटिव काफ़ी ज़्यादा हुआ है, और ग्रुप्स पे लोग क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स की वो देते रहते हैं, टिप्स वगैरह देते रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है पाकिस्तानी इंडस्ट्री का हम्म, व्हेन इट कम्स टू वेब थ्री. बिल्कुल। So I won't name someone, but when a wrong person becomes an influencer in a technology, I think we all know who I'm trying to mention. तो उससे नुकसान मुल्क का ही हुआ है. रेगुलेशन एस्पेक्ट्स उतने ही टफ हो गए हैं, उतने ही चीज़ें उस पे आ रही हैं. सो आई वुड से डू नॉट आस्क एनीवन कि मैं किसी कॉइन में इन्वेस्ट करूँ ना करूँ. डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस. Always do your own due diligence. So the link I mentioned, Hassan, is of Facet Web3 community. So we are हमने start ओके। इसको WhatsApp community से इसलिए किया because we do not want to actually target crypto bros. जो Discord पे they're big on it. We want to क्योंकि हम जब वेब थ्री का नाम लेते हैं तो पाकिस्तान में लोगों को लगता है बस इट स्टार्ट्स एंड एंड्स ऑन क्रिप्टो. दैट्स नॉट द राइट वे टू डिस्क्राइब क्रिप्टो, to describe Web3. So actually, we need to people to understand that it has tons of industries. You can focus on decentralized finance, which can help you access financial services, which can help you do financial management and a lot of things. Then it has gamification का जो concept है, gamify, इसमें NFTs आ जाती हैं, बहुत से और concepts आ जाते हैं. That part it has, you have blockchain, you have other technologies. So there is like a pool of technologies that you can explore. Crypto is literally like internal most layer of it. It is involved in every phase, but try to understand the use cases. Try to understand कि कहाँ के किन किन प्रोडक्ट कौन से प्रोडक्ट्स बिल्ड हो सकते हैं. I think Taimur is here. He's in the in. I can see the comments. He's doing a wonderful job when it comes to creating digital products. Now, this is something that we really need to talk about. Really need to encourage our youth to work more towards those areas. So you can go and build Web3 products. So different use cases identify करें, उन पे छोटे-छोटे digital products build करें. It will help you not only learn but also impact the industry as well. और इसी तरह market भी open होती है. Education and awareness is literally the first step. So education awareness के हम्म, बाद I would say it's more about uh, identifying the use cases and then collaborations. पाकिस्तान का एक और मसला है कि हम silos में बहुत कुछ कर रहे होते हैं, हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है. But when it comes to collaborations, we do not collaborate, and collaborations can actually give you the scale. Why we went for Prime Minister Youth Program is because it can give us that edge to scale across Pakistan when it comes to the education industry and when it comes to the academia. So this is something that I really believe in. You can start from these resources, and for education and awareness part, and then start identifying use cases, build products around that, and then go big on collaborations. ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन और है। वो पूछे थे कि यार, हाउ वेब थ्री इज मोर सिक्योर देन वेब टू। तो uh, इसका जरा बता दें। अच्छा, इस पे ना मैं थोड़ा-सा एक इंस्टेंस रिसेंटली हुआ है व्हिच हैज़ गॉन बिग इन दिस इंडस्ट्री, उस पे थोड़ी बात कर लेते हैं. सो हम्म, रिसेंटली फ्यूचर ऑफ लाइफ एक ऑर्गनाइज़ेशन है, उनकी वेबसाइट पे अगर जाएँ तो वहाँ पे एक ओपन लेटर पड़ा हुआ है, ओपन एआई को और बाकी कुछ फर्म्स को जो एआई के एडवांसमेंट्स पे बहुत हेवी काम कर रही हैं. सो उसको बेसिकली एक तरह से साइन किया है एलन मस्क और कुछ 2600 अदर टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने, जिसमें दे हैव सेड दैट वी शुड स्टॉप डेवलपमेंट ऑफ एआई. उन्होंने रीजंस कुछ हम्म, लिखी हैं उस पे, उसको पढ़ लें आप लोग जाके. एक बहुत बड़ी रीजन उन्होंने दिया है व्हिच वी ऑल आर अफ्रेड ऑफ इज दैट ह्यूमन लाइक कैपेबिलिटी. लाइक उनको ये भी डर है कि कल को इट कैन हैव इमोशंस. अभी रिसेंटली मैं एक और डॉक्यूमेंट्री देख रही थी. इट शोड दैट people were not able to identify AI between people. So 4-5 लोग थे और एक answers were from ChatGPT, and people were not able to identify
that it is AI. So इस तरह का कुछ डर है लोगों को कि like it is replacing human like capabilities. Models are out there, virtual beings का concept है, इसमें digital twins का concept है. So there is a lot that's out there. So with this kind of scare in our mind, उन्होंने ये sign किया है. और second उन्होंने ये कहा है कि देखिए AI को अगर बहुत ओवर सिंप्लीफाई मैं करूँ तो इट्स ऑटोमेटेड कंप्यूटेशन और ऑटोमेटेड कंटेंट क्रिएशन, जो चैट जीपीटी और बाकी फॉर्म्स में हमें नज़र आ रही है, अब डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो उसके अराउंड बिल्ड हो रहे हैं. सो दैट इज़ ऑल गोइंग अनऑडिटेड, उसको कोई ऑडिट तो नहीं कर रहा. सो ये उनको डर है कि इट कैन प्रोड्यूस डिस्ट्रक्शन, इट कैन विच इज़ सम हाउ ट्रू. आई मीन कोई भी ऑडिट नहीं कर रहा, आप जो मर्जी करते रहो, जिस मर्जी तरीके का कंटेंट प्रोड्यूस करते रहो. सो द Hmm. क्वेश्चन दैट यू आस्क दैट हाउ Web3 इज एक्चुअली सिक्योर, आई थिंक अभी बहुत से लोग इस कॉन्सेप्ट को एक तरह से रिसर्च कर भी रहे हैं. इज द इंटीग्रेशन ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज. सो इफ यू इंटीग्रेट एआई विद ब्लॉकचेन, आई थिंक इट कैन सॉल्व द अनऑडिटेड व को ऑडिटेड में कन्वर्ट करने का प्रॉब्लम. बिकॉज ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन इज एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी. आई थिंक इनका इंटरनेट का इशू हो गया है दोबारा. यस, लेट्स वेट अ मिनट. अच्छा, इसके अलावा किसी और के कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो काइंडली प्लीज़ आप नीचे कमेंट कर सकते हो. वर्किंग के आप ओके लॉस्ट. Hassan, can you tell me where did I यस, ठीक where है. was I lost? हाँ, लास्ट बात क्या बोली थी? जस्ट अ मिनट. आई थिंक जो इंटीग्रेशन वाली बात थी, राइट साथ Web3 एंड AI की इंटीग्रेशन. यस यस यस. Okay. इंटीग्रेशन ऑफ एआई विद ब्लॉकचेन, आई थिंक ब्लॉकचेन को ना डिस्क्राइब ही ऐसे किया जाता है, इट्स मोर ऑफ अ ट्रस्ट इंजन. इंटीग्रेशन ऑफ इट विद एनीथिंग विल एक्चुअली मेक दैट वेरी टेक्नोलॉजी ट्रस्टवर्दी. सो अगर सिक्योरिटी स्टैंड पॉइंट से बात की जाए ना, इवन वी एट फैसेट आर एक्सप्लोरिंग Web3 फ्रॉम द सिक्योरिटी स्टैंड पॉइंट at this point, because after some basics we want to introduce a certification like program training program towards the security standpoint. So आप डिजिटल हो तो ऑब्वियसली उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं इन टर्म्स ऑफ security, in terms of, so cyber security is again a very big thing when it comes to the Web3 part. There is an organization that we are currently collaborating with. I will mention the name here, you can share it with people. It's called Trustcova. They are someone who are working in the Web3 industry from security standpoint. So you should definitely explore them. Wonderful guys. They're basically from the academia background. One of the co-founders was basically an instructor at LUMS for around 18 to 20 years. So comes with a very legit sort of background, and they're working on Web3 completely from the security standpoint. So I would say go explore them. ओके, परफेक्ट. अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, वो ये कि हाउ टू गेट इनटू फैसेट, जो कि बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है. लिखा है कि आई वांट टू जॉब एट योर कंपनी. तो क्या प्रोटोकॉल्स या क्या रिक्वायरमेंट्स या जो भी चीज़ें वो शेयर कर दें. I would say अगर if you are a student तो फिर आप I would say start करें. You can become part of our student ambassador program. If any one of you is interested, feel free to reach out, or I can share the link to student ambassador form as well. We are Please. currently, Asim is in the comment section. Asim is one of our ambassadors. So if you need to have, पहली बात, you need to have the Web3 enthusiasm. Otherwise, you're not the right fit. So you have to have the Web3 enthusiasm in yourself. I'm happy to onboard you as Passer ambassador.
सेकंड आपने बात की जॉब्स एंड इंटर्नशिप्स. सो जैसे हमने बात मैंने स्टार्ट में explain किया, Pacific is not a local company. We are a global firm. So we have markets in different regions. In Pakistan, we are not big on hiring at this point. But internationally, you have still a chance. So you can go to our career section, and we do have some openings. But you have to see what sort of role can you fit in. और एक और चीज generally tip for anyone is that I won't ask you to go and ask anyone for a job. Instead, आप अपने आप को ऐसा बिल्ड करो ना कि आपका पोर्टफोलियो इतना स्ट्रांग हो, आपकी आपकी इंडस्ट्री लीडर्स के सामने एग्जिस्टेंस हो, that they reach out to you instead of you asking anyone for a job or an internship. So it's good to ask, but ask in a way that first I should know you, your strengths, your skills, your interests. I should know that you exist in industry. Then आप मुझे कहोगे ना कि hey, I'm looking for a job. Do you have or I saw that you have an opportunity at your company. Would you like to refer me or something? That Hmm. makes you stand out. But if you randomly go and say to someone that hey, I'm looking for a job, I think वो भी कहेगा कि who are you? Point is even Exactly. I've never applied for a job, but I have never asked anyone for a job as well. Build your portfolio in such a sense that people reach out to you instead of you reaching out to them. Tamur has asked, how can I start a Web3 or AI startup? Okay, very good. So uh, Web3 में depend करता है the startup you kind of want to is in which niche. First of all, I would say identify the niche, and उसमें आप education part पे जा सकते हैं. उसमें आप healthcare industry, maybe real estate industry, maybe metaverse part. There are lands, buildings in metaverse people are investing in. So you need to first identify the area you want to work at. ठीक है. उसके बाद the problem that you want to solve. किसी भी startup के लिए start with the problem, start with why you want to build this startup, and then based on that, build a community around it. So come up with something that the community really believes in as well, and then maybe go around building that startup. So I won't say कि specify कर दें आपके आपको Web3 में ओवरऑल नीश सेलेक्ट करनी पड़ेगी, स्पेसिफाई करना पड़ेगा, अदरवाइज इट्स लाइक अ होल ओशन. आप हर चीज़ पे कुछ ना कुछ नहीं बिल्ड कर सकते. आप एनएफटी मार्केट प्लेस बना सकते हैं, आप कुछ भी बना सकते हैं, डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट टू डू. आप अपना मेटावर्स बना सकते हैं. वी हैव डिफरेंट एग्जांपल्स who are building that. Um, So I'll just give you an example of that we ourselves entrepreneurship day था जिसमें I got to pitch क्योंकि मैं वर्चुअल रियलिटी में काम कर रही थी, सो मैंने again. Okay. So I pitched this idea that if a doctor is sitting in Islamabad and a patient is in Quetta, so he should be able to do a surgery here through virtual reality and robotic surgery kind of thing. So uspe I got a lot of responses from doctors and patients who were like, um, उनका इंटरनेट का इशू हो गया है दोबारा. ओके, सो तब तक किसी और का कोई क्वेश्चन है तो दे कैन आस्क. और यस, लेट मी जस्ट ओके. यस यस, अब ठीक है. I was just saying that telemedicine, telesurgery, robotic surgery, these are some of the areas that Web3 can help with. अब देखें health sector भी it has it's an ocean.
अब हेल्थ सेक्टर में यू हैव डेटाबेस मैनेजमेंट, यू हैव फाइनेंशियल एस्पेक्ट. देखिए, फाइनेंशियल एस्पेक्ट इज एवरीवेयर. व्हाई इज फिनटेक, व्हाई फॉर द लास्ट 2 years फिनटेक एंड ई-कॉमर्स वर इन बूम इन पाकिस्तान और still in boom in Pakistan? Because पैसा हर जगह involved है, be it any sector, पैसा is involved. So I would say focus on maybe the financial management part of it, focus on the fintech part of it, जिसमें decentralized finance का concept आप introduce कर सकते हैं, health care industry में भी. फिर virtual reality के साथ surgeries का concept हो सकता है, but जैसे मैंने अभी example दी कि when we pitched it, I pitched it to Techstars back in 2018, so I got the comment that wait for 5G, you are ahead of your time. So obviously, अभी recently एक robotic surgery हुई भी है. So you can go and read about it. Virtual reality के through the surgery has been done. So it was for the research part, but again, it's out there. So digital health sector is definitely going to be innovated. जिसमें आपकी telemedicine है, telesurgery and things like that. ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा मैम, मेरे पर्सनली 1-2 क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपसे मैंने पूछने थे। एक तो ये चीज़ कि आपने बताया ना कि ना आपने कभी कहीं अप्लाई किया है, ना इस तरह की कोई चीज़। सो आप कैसे सोशल मीडिया पर या फिर आप अपनी कम्युनिटी के थ्रू कैसे आप अपना जो नेटवर्क है उसे यूज़ कर सकते हो फॉर दीज़ काइंड ऑफ थिंग्स? So I would say LinkedIn is very big, but आप बाकी भी अपने socials को active रख के उनको एक तरह से pitch कर सकते हो. First is आपकी presence जो है ना वो बहुत optimized तरीके से होनी चाहिए. मसला हुँ, ये होता है कि एक तो आपकी प्रोफाइल आपकी अपडेटेड नहीं है, आपकी प्रोफाइल पे आप सर्टिफिकेशंस नहीं ऐड कर रहे हो, आप पोस्ट नहीं कर रहे हो कि हर एग्जांपल ये भी नहीं कि रोज पोस्ट करने बैठ जाओ. ऐसे भी लोग हैं जो दिन में 2-2 पोस्ट करते हैं. नॉट नथिंग अगेंस्ट देम, बट द प्रॉब्लम इज फिर आप फुल टाइम इन्फ्लुएंसर बन जाओ ना. यू डोंट नीड टू वर्क, यस देन आप एग्ज़ैक्टली। इन्फ्लुएंसर ही बन जाओ. आई डोंट बिलीव इन हुँ, लाइक पोस्टिंग एवरीथिंग अबाउट रोज की बेसिस पे कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहो. इट इज गुड टू पुट इन्फॉर्मेशन आउट, बट द पॉइंट इज आर यू वर्किंग इवन, या बस आप सारा दिन पोस्ट ही करते रहते हो. तो ये भी मेरा हुँ, एक इख्तिलाफ है थोड़ा कुछ कुछ सर से जो हर टाइम ही पोस्ट वगैरह करते रहते हैं. सो सेकंड, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, दैट्स अगेन अनदर एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. बट इफ यू आर समवन वर्किंग इन टेक इंडस्ट्री, then at least work as well, just don't post. Second is हुँ, I would say आपकी प्रोफाइल इतनी ऑप्टिमाइज्ड और अपडेटेड हो. आप मंथली, वीकली, मे बी once in 2 months अपडेट दे रहे हो कि दिस इज समथिंग आई वाज वर्किंग ऑन, दीज आर सम. हुँ, अच्छा, अब जब आप पोस्ट करते हो ना, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए. जब आप पोस्ट करते हो ना, उसमें एक तो अपडेट होनी चाहिए कि व्हाई आर यू पोस्टिंग दिस. देयर शुड बी समथिंग ना कि जिसकी वजह से आप पोस्ट कर रहे हो, ये नहीं कि आपने एम ही पोस्ट कर दिया. सेकंड इज देयर शुड बी समथिंग फॉर पीपल टू लर्न फ्रॉम इट. बहुत से लोग ये भी करते हैं कि हाय, आई एम लीविंग दिस कंपनी. तो इससे लोगों को क्या फायदा है? यू आर जस्ट अपडेटिंग. So हुँ, make sure to add something for people to learn from it. If you are leaving a company, write 3 pointers. Make sure you follow content की जब बात आती है ना, तो I feel you should be always following the concept of threes. Uh, Add 3 pointers. What did you learn about working with them? What's the best thing about working with them? How are you going to navigate this in your future life? So something for people to learn. वो आपका कंटेंट क्यों देखें, वो आपका कंटेंट क्यों पढ़ें, या उससे इंटरेक्ट क्यों करें. Best is when they are something learning something from it. Otherwise just don't post. So I would say एक ये करें, and second ये करें कि send connection requests. There's nothing wrong with connection requests. But then अगर आप किसी इंडस्ट्री लीडर को connection request भेज रहे हैं, make sure to introduce yourself, to introduce your background, to tell why you are interacting with them, how they can help you, or how their journey is relevant. Do background हुँ, research on everyone you kind of connect to, और उसमें देखें कि आपका जर्नी उनके जर्नी से कैसे लिंक हो रहा है. What's common maybe in between you, and how their company is unique for you. So कुछ भी इस तरह का build करें, and then interact with their posts. लोगों की posts अगर आपको पसंद आती हैं, like them, comment on them. अच्छे comments, ये नहीं कि comment कर दिया interesting, nice. No, nothing like that. थोड़े insightful, थोड़ा critical. अगर आप comment कर रहे हो, make sure it is critical. Make sure आप उसी की बात की कोई कंटिन्यूएशन कर रहे हो, उसमें कुछ ऐड कर रहे हो, कुछ अपना फीडबैक दे रहे हो, समथिंग लाइक दैट, जिससे वो आपके साथ हुँ, कनेक्ट हो सके. अगर आप कह दें
CFBR is good as long as someone is looking for a job or something like that. So, इस तरह की चीज़ें लाइक मेक श्योर ये जो भी बहुत आप से कर लोग रहे कह हो रहे इट होते इज़ वैल्यूएबल, अदरवाइज़ उस चीज़ का फ़ायदा नहीं। हैं। फिर इंटरैक्टिंग विद देम एंड आप थोड़ा इंटरैक्ट कर लो ना, उनको भी नज़र आ जाओ, उनको आप वो सेम एक्जिस्टेंस का पता चल जाए कि ओके दिस पर्सन एक्जिस्ट, देन रीच आउट टू देम। एक लाइन लिखो कि हे वी हैव बीन कनेक्टेड फॉर अ व्हाइल, लेट्स डू 30 मिनट्स जस्ट टू गेट टू नो एंड अंडरस्टैंड, और या फिर कोई एजेंडा शेयर कर दो स्पेसिफिकली क्या आई रिसर्च्ड ऑन योर स्टार्टअप, दिस इज समथिंग आई थिंक कैन बी इम्प्रूव्ड। आप ना उससे कुछ मांग रहे हो, एक्सपेक्टेशन कोई होनी ही नहीं चाहिए आपको, ठीक है? आप सिर्फ ये कह रहे हो कि यू हैव रिसर्च्ड ऑन देम और देयर कंपनी और देयर सोशल मीडिया प्रोफाइल और एनीथिंग रिलेटेड टू देम, एंड दिस इज योर फीडबैक दैट यू वांट टू पिच, दिस इज समथिंग दैट यू वांट टू टॉक अबाउट। एंड जब आप लोगों परफेक्ट। को वैल्यू प्रोवाइड करते हो ना, दे ऑलवेज रिमेंबर, दे ऑलवेज रिमेंबर यू। और वहां से कहाँ लीड करेगी वो कॉल, बेशक 2 साल पहले आपने की हो, 2 साल तक बाद उसके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगी ना, वो आपको जरूर याद रखेगा और वो पहली बात आपको रीच आउट करेगा। सो यू आर नॉट आस्किंग फॉर अ जॉब, यू आर जस्ट, मैं अभी भी हमारे पार्टनर्स है ना, अगर मैं उनकी कोई पोस्ट देखूं मुझे लगे यार ये चीज इंप्रूव हो जाए, आई हैव नथिंग टू डू विद देम, देयर आर पार्टनर्स, आई डू टेल देम माय फीडबैक, yeah this can be improved, I think if you want any help I'm happy to help now। मैं कोई चैरिटी सेंटर तो नहीं खोला हुआ ना, बट इट आई नो दैट इट ऑलवेज कम्स बैक, आई डोंट नीड टू एक्सपेक्ट एनीथिंग एट दिस पॉइंट। सो दिस इज समथिंग दैट हैज हेल्प्ड इन माय जर्नी, बी अ गिवर। कम्युनिटी आपको सिखाती ही यही है कि ऑल सपोर्ट पीपल, ऑलवेज ट्राई टू इनकरेज पीपल टू लिफ्ट अप। हमारे यहाँ एक दूसरे को डाउनग्रेड करने का बहुत बुरा रिवाज है, हल्का सा किसी ने कुछ कर दिया हम फौरन बिल्कुल। शुरू हो जाते हैं कि किसी तरह ये बंदा, एनवीएस कल्चर बहुत है। सो इंस्टेड ऑफ दैट एनवीएस कल्चर, लेट्स स्टार्ट अपग्रेडिंग आवरसेल्व्स टू एक्चुअली हेल्प पीपल, टू एम्पावर देम एंड जस्ट सी के आप किस तरह से किसी को अपने फीडबैक के थ्रू इम्प्रूव कर सकते हो एंड इट हाउ इट कैन हेल्प देम। ये अच्छा कल्चर बेसिकली पाकिस्तान में है, अच्छा खासा है कि मतलब हम अगर किसी की हेल्प करें ना तो हमें एक चीज़ का बड़ा डर होता है कि यार ये मुझे रिप्लेस ना कर दे। लाइक एक इंसान को खुद ही अपने आप पर इतना हाँ, ट्रस्ट हमारे नहीं है कि यार मैं इतने काबिल नहीं। सो एक पॉडकास्ट या पता नहीं मैं किधर देख रहा था, उन्होंने बड़ी एक अच्छी एग्जांपल दी कि लेट्स सपोज इफ दिस इज यू एंड ये एक बंदा है जिसको आप सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है? जब आप इसे ऊपर उठाते हो तो आप ऑटोमेटिकली और ऊपर चले जाते हो, एंड ये चीज़ हम नोट नहीं करते। हम कहते हैं कि नहीं यार दिस पर्सन विल रिप्लेस मी, और अगर आप इतने कंपेटिटिव नहीं हो तो यस दे विल डेफिनेटली आपको वो कर देंगे। बट यस ये एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपको याद होगा, वी मेट एट आईटीसी इन एशिया, एंड वहाँ पे आपने मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी कि अगर आपको दोबारा चांस मिले बैचलर्स का, सो यू विल डेफिनेटली गो टू फिनटेक। व्हाई? ये मैं सोच रहा था बट मुझे मौका नहीं मिला कि मैं आपसे पूछूं। बट यू लाइक आपने बताया ना कि फिनटेक की इम्पोर्टेंस एंड क्यों आप लोगों को साइड पे जाना चाहिए या जो भी। सो ये मैं सोच रहा था बट कभी मौका नहीं मिला, दोबारा मिले नहीं, वरना मैंने आपसे जरूर जरूर पूछना था। बट यस, कैन यू प्लीज? ओके, लेट मी रिपीट। अच्छा, I kind of lost. ओके ओके ओके। सो आपने जो बताया था कि अगर आपको दोबारा मौका मिले बैचलर्स का, सो यू विल गो टू फिनटेक, एंड एक आपने मुझे इम्पोर्टेंस की बताई थी कि यार वाई फिनटेक इज़ इम्पोर्टेंट है, एक बंदे को क्यों सीखना चाहिए। बट मुझे फिर मौका नहीं मिला दोबारा मिलने का, तो मैंने कभी पूछ लेता हूँ, फिर पता नहीं कब मिलते हैं। लेकिन यस, एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प अदर पीपल एज वेल कि जो ये सुन रहे हैं। सो व्हाई फिनटेक इज़ इम्पोर्टेंट, क्यों Yeah, सीखना right. चाहिए? So, no, sure. So the kind of exposure that I have now from the startup ecosystem, generally from investment industry, from the startup industry, अगर वो exposure मुझे तब होता जब मैंने अपनी डिग्री चूज करनी होती, तो I would have definitely chosen fintech or something emerging technology related to fintech. It's because I think आप कुछ भी कर लो ना जिंदगी में, this comes from personal experience. अगर आपके पास financial literacy नहीं है ना, तो you can't go anywhere.
आपने आज 10 रुपए कमाए ना, वो कल -10 होंगे अगर आपको फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है तो। तो हमें बजटिंग नहीं आती, हमें टैक्स अपना फाइल करना नहीं आता, हमें क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं आती, उस तरह का कोई इन्वेस्टमेंट एजुकेशन हमारे पास नहीं है कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, कल को वो चीज़ कितनी हो जाएगी, इस तरह की चीज़ें नो वन टीचेस अस, राइट? नो वन कम्स एंड टीचेस अस। सो आई थिंक एक तो फाइनेंशियल लिटरेसी होना बहुत इंपॉर्टेंट है अर्ली ऑन। आपको करियर में ये चीज़ एज देती है अगर आपको फाइनेंशियल लिटरेसी है तो। आप नेगोशिएट अच्छा करते हो अपने एम्प्लॉयर के साथ, आप अपने कोवर्कर्स के साथ फाइनेंशियल एस्पेक्ट हर जगह हर चीज़ और बिज़नेस माइंडसेट में डेफिनिटली यू नीड द फाइनेंशियल एस्पेक्ट। आप अगर आपको अपनी पर्सनल फाइनेंसेस नहीं मैनेज करना आते तो आप किसी कंपनी के फाइनेंसेस कैसे मैनेज करोगे? और अगर आप किसी कंपनी में भी काम कर रहे हो या अपने स्टार्टअप पे भी काम कर रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे क्या मैटर करता है? एट द एंड ऑफ द डे इट्स द मनी, इट्स द सेल्स, इट्स द कस्टमर रिटेंशन, इट्स द कस्टमर एक्सपीरियंस। ये 4 चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। सो जो भी प्रोजेक्ट आप कर रहे हो मेक श्योर करो कि आप इन 4 क्वेश्चंस को आंसर कर सको। The money it generated, the customer retention and customer approval satisfaction it had, and sales it is generating over time. So in startup ecosystem एक term बोली जाती है कि be आई थिंक इनके इंटरनेट का इशू हो गया है. Let me just confirm. Okay. So yes, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था. इसके अलावा अगर किसी का कोई सवाल है या कुछ है तो हम इसे कंफर्म कर लेते हैं. यस again loss. यस बस That's यस why I was able to communicate my point that आपको यस यस फाइनेंशियल यस. एस्पेक्ट एंड टेक्नोलॉजी अगर ये दोनों आपके पास नॉलेज है तो नो वन कैन स्टॉप यू। किसी कोई कोई ऐसा एम्प्लॉई जिसको ये पता हो कि उसने 20 कंट्रीब्यूट किया है, उसने कितना पैसा कमाया है, कितनी हुई है, उसके कस्टमर्स कितने आए हैं, कितने कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन अच्छी रही है, नो एम्प्लॉयर कैन एवर आर्ग्यू विद सच एन एम्प्लॉय। सो इसीलिए आई थिंक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट अगर आपको दोनों की नॉलेज है तो नो वन कैन स्टॉप यू, बी इट योर ओन बिजनेस, बी इट समवन एल्सेस। Perfect. Thank you so much. And ओके आई थिंक हमने आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया. हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए जो कि हो सकते थे. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. बस जाने से पहले एक आपका एक एंडिंग नोट या कुछ वर्ड्स अगर आप शेयर करना चाहेंगी जो कि आपको लगता है कि करना चाहिए. ऑलमोस्ट तो आपने सारी चीज़ें कवर कर ली है, सो कुछ बचा नहीं है. बट जस्ट अगर आप मे बी इन 1 मिनट लास्ट कुछ एंडिंग नोट कहना चाहेंगे. So I would say ending note is again simple. Be constructive in your feedbacks. Always be very very critical and constructive, and help as many people as you want. To be honest, आपकी जो किस्मत में है ना वो आपसे कोई छीन नहीं सकता. No matter आप so envy is like I think अपनी जिंदगी से ना वो ये aspect ही निकाल दें. Look at people from a perspective of inspiration. Look at people from a lens of inspiration. Uh, Try to relate yourself with them, how you can be like them. So जितना उनसे relate करेंगे उतना ही you can actually get there, otherwise you are going nowhere. एक चीज ये, and secondly be very very self aware and critical and brutally honest to yourself to actually go anywhere. And then try to make that in the community aspect as well, help people become self aware. एंड इस इन बेसिक्स के साथ फिर आप जो मर्जी करो लाइफ में, बी इट एनी टेक्नोलॉजी, बी इट technology is, to be honest, just a tool. At the end of the day, we all are humans, we want empathy, we want that support from each other, and to get anywhere in life. So this is like kind of the ending note that I would like to give. Baki, I think we all are connected, so happy to answer anything that anyone might have. And I'm already mentioned that I'm active on socials, so anyone can connect. Yeah.
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Share. थैंक यू फॉर योर टाइम। मैं So, आपका share. प्रोसेस भी शेयर कर देता हूँ। आप लिंक्डइन मैं के साथ शेयर कर देता हूँ, जस्ट सेकंड। So, Sarah asked me to share links with my socials. So happy to do that. No worries. Hassan, you can share these on the comments. ओके, yes, your LinkedIn, Facebook, Instagram, then okay. So thank you so much for coming. Thank you for your time. बाकी कहीं ढूंढ Uh, ढूंढ लेना. You can Google. सॉरी, आपकी आवाज़ कट हो गई। You're saying something? All right. Thank you so much, Hassan. ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग। एंड आई होप जितने भी लोग यहाँ पे आए इन्होंने कुछ ना कुछ सीखा ज़रूर होगा। एंड आपने अपने हमें इतना ज़्यादा टाइम दिया, लाइक 90 मिनट्स, स्टिल ऑन गोइंग। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर वैल्यूबल इंसाइट्स। एंड आई होप आगे भी इस तरह की हम चीज़ें कराते रहेंगे। एंड थैंक यू फॉर ऑल द थिंग्स, जितने भी आप काम कर रही हैं फॉर द कम्युनिटी। Thank you so much. So this was our episode 1 of कैसे, and hopefully आगे भी हम करवाते रहेंगे इस तरह की चीज़ें। नेक्स्ट वीकेंड हमारे पास एक और गेस्ट हैं जिनको हम सून पोस्ट वगैरह भी कर देंगे। बट थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर कमिंग वंस अगेन। बाकी टेक केयर No worries. एंड Pleasure being here. Thank you so much, Hassan. Bye. थैंक यू सो Hafiz, मच, everyone. हाफिज़।